are saying why this discrimination. So if a Sikh can, if a Hindu can become a Sikh or Hindu can become a Buddhist, जो दोनों में भी caste system नहीं है, तो Christianity में भी caste system नहीं है. Porata Samiti from Andhra Pradesh came here at Jantar Mantar to protest, to demand for SC for Christians community, because the same people from SC community, though both the religion have no caste system, but in one religion you are providing the SC status for the people, and the other religion you are discriminating. So we have the leader from the Oliver, Mr. Oliver. Sir, Yes. why you are demanding? It's a long demand. Last time you have protest here at Jantar Mantar, but Mr. Martin is there. All the people, most of the people are there. Why you are raising this demand? 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो हुआ है उसमें वो लिखा है कि जो लोग शेड्यूल कास्ट में है, जो हिंदूज है, वो क्रिश्चियनिटी बगल कर छोड़कर, आई मीन एक्सेप्ट फॉर क्रिश्चियनिटी, किसी रिलीजन कन्वर्ट हो सकता है. नहीं, They can go मुस्लिम्स into- के साथ भी लास्ट टाइम मुस्लिम के साथ भी वही हुआ है. भी नहीं है. क्रिश्चियन, यू कैनॉट बिकम अ क्रिश्चियन, यू कैनॉट बिकम अ मुस्लिम, यू कैन बी अ बुद्धिस्ट हो सकता है, सिखिज्म को भी जा सकते हैं, मगर क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम नहीं जा सकते, क्योंकि इफ यू वंस यू बिकम अ क्रिश्चियन और अ मुस्लिम, दे विल लूज SC/ST atrocities act, वो जो प्रोटेक्शन देते हैं वो they will not have, reservation also. as well as all statutory reservations they will not get. So we are saying why this discrimination. So if a Sikh can, if a Hindu can become a Sikh or Hindu can become a Buddhist, जो दोनों में भी caste system नहीं है, तो Christianity में भी caste system नहीं है, तो सिर्फ Christianity के लिए क्यों पूछ रहे हैं कि Christianity में caste system नहीं है तो आपको reservation क्यों चाहिए, आपको SC status क्यों चाहिए? तो सिख लोगों को भी नहीं है, तो उसको दिया था ना. ये बहुत सारा इस विषय पे तर्क देते हैं कि जो इंडियन ओरिजिन के रिलीजन है, ऐसा तर्क दिया जाता है. अब ये कितना ऑथेंटिक है ये आपके, ये सिखिज्म है वो यहाँ से उत्पन्न हुआ, और जो आपको बौद्धिज्म है वो भी उसकी भी मातृभूमि इंडिया ही है, भारत है. लेकिन कहते हैं क्रिश्चियनिटी यूरोप से आया, अरब से इस्लाम आया. इसलिए क्या ये रीजन है, क्योंकि संविधान में तो सबको बराबर दे दिया गया, तो ये रीजन ये आपके लिए काउंटर किया जाता है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? सर, रिलीजन कहाँ से भी हो, हाँ, let it be from any different country, हम इंडियन है कि नहीं? इंडियन है सब, है ना? we all are Indian. राइट. तो आजकल अब एक बात साफ बोलिए कि ये कास्ट सिस्टम है, वो रिलीजियस कास्ट सिस्टम है या सोसाइटियल कास्ट सिस्टम है? ये कास्ट सिस्टम जो बनाया गया, जहाँ तक संविधान की बात है, और religion में हिंदू रिलीजन की है कि प्रॉब्लम नहीं? है है ना? लेकिन उन्होंने कहा इस्लाम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्रिश्चियनिटी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं. डाइवर्ट हो रहा है. हाँ. तो ये कास्ट सिस्टम जो है उसका शुरुआत हिंदुइज्म में हुआ है, मगर अभी वो सोसाइटियल सिस्टम हो गया, मतलब सब में आ गया वो. सब में आ गए, क्योंकि आप एक इफ यू टेक अ विलेज, अ गांव और अ टाउन, ये इसमें एक हरिजन वार्ड होगा, एक हरिजन कॉलोनी होगा, SC कॉलोनी होगा, उसको ईयर मार्क करके सब SC लोग उधर रहना बोलते हैं. तो उस कॉलोनी से जब एक आदमी बाहर आके वो क्रिश्चियनिटी ले लेते हैं, वो 24 आवर्स चर्च में नहीं रहते ना, फिर वापस उसी घर पे जाना है, तो सोसाइटी उसको, अरे ये क्रिश्चियनिटी बैप्टिज्म लिया है, अभी वो दलित नहीं देखेगा, और सोसाइटी क्या सोचेगा, अरे वो यही बंदा है, यही है, उसका माँ है, वो बाप है, उसका फुल खानदान है, कोई फर्क नहीं. सो इट हैज बिकम अ सोसाइटियल सिस्टम मोर देन अ कास्ट सिस्टम. जैसा कि कहते हैं कि असंसदीय शब्द है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन हिंदुओं में जो सबसे निचले तबके पे हैं, जिनको भंगी शब्द से कहा जाता है, उनको इस्लाम में चले जाते हैं तो मेहतर कहा जाता है, बट इक्वल स्टेटस, सोशल स्टेटस एक सा रहता है. तो क्या आप वो फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है उसको रेज कर रहे हैं? It is not about who looks at what. It is about the injustice that is happening. तो ये बात नहीं है कि अपर कास्ट लोगों को भी इंजस्टिस नहीं हो रहा है. देखो उसको शायद उसका कमाने में थोड़ा कम तो रहेगा. ये कौन कर रहा है सोसाइटी के अंदर? क्या अगर वो
रिलीजन चेंज करता है, रिलीजन चेंज करता है, तो क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर जो उसके अंदर भी अपर एक खास किस्म का अपर कास्ट है जो उसको स्वीकार नहीं करता चेंज करने के बाद, कौन कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन? या जो हिंदूज हैं वो, क्योंकि उनके धर्म से तो सोसाइटल माइंडसेट। सी ये सभी लोग कर रहे हैं। एक आदमी दो आदमी का प्रॉब्लम नहीं है, ये इट्स जस्ट अ सोसाइटल माइंडसेट कि जब मतलब उसमें भी जैसे मुस्लिम्स में भी कहते हैं कि हम ऊंची जाति के हैं, ऐसे क्रिश्चियंस में भी होता है क्या? क्रिश्चियंस में ऊंची नीचे नहीं होता है, हाँ, इक्वल होता है, इक्वल होता है फिर सब। तो या। मतलब क्या लगता है कि ये जो जहाँ से वो लाए हैं, जहाँ से वो आए हैं, वो उनको पीछा नहीं छोड़ता वहां भी? See, that is the problem. Their where they have come from, their background, their current situation, that doesn't change. वो बदलता नहीं है। अच्छा। तो when that doesn't change, when I'm going back to the same house, when I'm going back to the same colony, when I'm going back to the same neighborhood, to the same landlord where I'm working, see, so they will not say this fellow is a Christian now, so he's a Dalit. He's not a Dalit. वो नहीं मानते कि आप क्रिश्चियन हो गए। it is not about my neighbor, it is not about my landlord, it is not about my job giver, it is about the whole society at large. मार्टिन सर, कितना आंदोलन आगे तक पहुंचा, क्या कोई उम्मीद लग रही है? आप यस, you said that you appeal to Mr. Modi, the BJP government, if they will give your relief and SC status, SC status, then you will support your community, your society will support. Yes. So can you explain, if they are not giving, so what will you do? Now, at present situation, Modi is very favorable to the SC Christians. You have hope. Yes, that's our great hope. Because of the Modi is giving many gifts to the many religious people, many communities. So we are also under his government now, so that we hope that the Modi ji this time, the third time, he is going to give the SC status for Dalit Christians. So because of that, he is a good leader now. We appreciate his works. He is moving entire the country, entire the world. He is doing good things, and he appreciated the Archbishop from Sri Lanka, and he brought one of the Archbishop from Kerala, and he given some award to him. So that is all favorable to the Christians now. So that we demand our SC status is going to get this year or maybe next year. Very soon, we hope that. You hope that. But one more thing I want to know, sir. How many people from Andhra Pradesh? Because state may prepare a bill or anything in the state government. So my state is ruling by NDA government now. The Chandrababu is ruling there. So he implemented the same thing in the assembly. Thus Y.S. Rajshekar Reddy also implemented the same bill in assembly when he was in chief minister. So the NDA government is ruling in my Telugu states now, so that this is the right time to demand this issue. So if the assembly is going to represent the issue, the Modi will give. You are saying that Naidu is ruling in Andhra Pradesh now, Yeah. and you hope that the NDA government will take favor from your side. What is your message to the people who is watching you? What would you like to say? Yes, the SC status we are demanding for Dalit Christians is the main issue in Andhra Pradesh and Telugu states. My people are going to support this issue. We are all one in one mind and one soul. So that is our people are demanding only one thing. We are not asking any money help. We are not asking any land help. We are not asking anything. But we need a religious freedom. So I request the Modi ji and I request my people, please support this issue. We will get soon very near. Your message in Telugu, if you want to say something. ప్రియమైనటువంటి క్రైస్తవులకు నాకు శుభములు. ఈ రోజున ఢిల్లీలో ఒక మహానగరంలో ఈ యొక్క జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఎస్సీ స్టేటస్ కొరకై ఒక ధర్నా ఏర్పాటు చేయబడింది. ఈ ధర్నాలో ఇంచుమించుగా 100 మంది పైన దీంట్లో పాల్గొని ఈ యొక్క సంఘీభావం తెలిపారు.
భారతదేశంలో నుండి అనేక రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన క్రైస్తవులు దీనికి సంఘీభావం తెలిపారు. అదేవిధంగా ఈ ఎస్సీ స్టేటస్ ఇవ్వడం వల్ల అనేక దళితుల జీవితాలు మార్చబడతాయని, అభద్రతా భావంతో ఉన్న క్రైస్తవులకు కొంచెం భద్రత వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఈ ధర్నా చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ రోజున 3:30 గంటలకు జస్టిస్ బాలకృష్ణ కమిషన్ ని మేము కలిసి మా మెమోరాండం అందించడం జరిగింది. త్వరలోనే మనం ఎస్సీ స్టేటస్ పొందబోతున్నాం. దాన్ని మేము నమ్ముతున్నాం. మోడీ గారు దాన్ని మనకి ఇవ్వబోతున్నారు. అందును బట్టి మేము వారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం.